जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। चैप्टर नंबर 12 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है जी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी सच एज ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। मतलब ये ह्यूमन की जो थिंकिंग है, ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है, उससे जो चीज़ आप बनाए वो है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके दिमाग से जो चीज़ बने जो कि इनटेंजिबल हो, टेंजिबल ना हो। जैसे कि आपने कोई पिक्चर बना दी, आपने कोई फॉर्मूला ईजाद कर दिया, आपने कोई स्लोगन बना दिया, आपने कोई गाना बना दिया, आपने गज़ल लिख दी। ये सब चीज़ें हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन इसको हम इसको कॉपीराइट करवा सकते हैं। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कोई डिज़ाइन बना दिया आपने। ये देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एनी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल दैट इज इंटेंजिबल बट दैट हैज़ द वैल्यू इन द मार्केट। तब आपकी इमेजिनेशन से कोई चीज़ बनी, आपके दिमाग से बनी, लेकिन उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से आपके फर्नीचर की इंपॉर्टेंस है, लैंड, बिल्डिंग, इसी तरह से आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की इक्वली इंपॉर्टेंट है, मे बी मोर। ये जो हम कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप बताइए आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देता है। आप कैसे, जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे पहले ही, कि हम कहते हैं ना कि यार ये नाम ही काफ़ी है इसका। आपने सुना होगा डॉलन्स, नाम ही काफ़ी है। मतलब नाम ही काफ़ी है क्योंकि वो बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की। आपने आईफोन परचेज करना, आईफोन का एक नाम है, ठीक है, वो उसका स्लोगन, उसका लोगो, उसका नाम, ये उसकी ही बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एप्पल देखें जिस तरह से बाइट किया गया है, जिस तरह से लोगो बनाया गया है, सिर्फ उसकी बहुत वैल्यू है। Most businesses rely on bright ideas. Whether it's developing new products, having a great brand, or creating eye-catching designs. Your ideas are your passport to business success. But how do you protect your ideas from being exploited by others? That's where intellectual property or IP law comes in. There are four main types of IP, each working in a different way: trademarks, copyright, design rights, and patents. Let's start with trademarks. Trademarks are used by businesses to protect their brands. You can register a trademark in the UK, across Europe, or further afield to apply to a name, a logo, or both. Trademarks can be a valuable long-term asset for your business. They only need renewing every 10 years. Then there's copyright. Copyright automatically exists in things like documents, photos, maps, plans, and websites. If you create any of these in your business, they're already protected by copyright for free. It is good practice to use the copyright symbol on anything you've created and keep good records of when and how they were created. Your copyright will last for up to 70 years after your lifetime, so it's another long-term asset. If you pay someone else to create something for you or your business, they will own the copyright, unless it's explicitly transferred to you in writing. If people buy your products because of the way they look, for example, furniture, jewellery, or clothes, you need to think about design rights. Registered design rights needn't be expensive and can cover the UK and abroad. Even if you don't register your designs, you may have unregistered design rights that are free and automatic, so your business may already own rights you didn't even know about. Finally, if you invent a new product or a new process, you should think about patents. Patents can last for up to 20 years, and registering a patent can be a pretty complicated and expensive process. That said, they may be a really good investment for your business, so it is worth seeking proper professional advice. We can guide you towards help on all these types of IP. Just have a look at the Business Wales website or phone 03000 603,000 and ask for help. It may be the best bright idea you've ever had.
अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, आपका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो आपको आपका जो आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या आपको कंपैरेटिव एडवांटेज दे भी सकता है या नहीं, क्या वो सबसे डिफरेंट भी है या नहीं, और है क्या, और क्या उसकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सबसे आइडेंटिफाई करना। मिस्टेक क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या या बनाना कैसे है। अगर पता भी लग जाए तो आपको नहीं पता उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है या वैल्यू किस तरह से लेके आनी है और उसको कैसे यूज़ करना है अपने बिजनेस के लिए। या आप ये मिस्टेक करते हैं, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली लेकिन उसको आप कॉपीराइट नहीं करवाते, आप उसको सेव नहीं करते, आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते। अगर रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई और उसको यूज़ कर सकता है। ये है जी आपके की फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पेटेंट, आपके ट्रेडमार्क, आपकी कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट क्या होता है जी, पेटेंट आपके निकले थे सबसे पहले मेडिसिन से निकले थे। ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट आपको फायदा इंकरेज करती है ये चीज़ें बनाने के लिए ताकि इससे सबका फ़ायदा हो और उसके बदले आपको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे पे करती है, या आप उसका खुद बिजनेस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। इसमें मेडिसिन में ये स्टार्ट हुआ था, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन है। पोलियो की वैक्सीनेशन सस्ती होने का एक रीज़न ये भी है कि उसके पेटेंट्स नहीं हैं। हाँ, जब कोई चीज़ बनाता है मेडिसिन में तो उसके पेटेंट्स के राइट उसके पास होते हैं या उस कंपनी के पास होते हैं कि वो सिर्फ बना सकते हैं, किसी और ने बनाने हैं तो उनको पैसे देने होंगे उस कंपनी को। अब इसी तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, कोई भी चीज़ जो यूज़फुल हो, जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोलर पैनल से बनाने वाली कार बना दी है, उसमें पेट्रोल यूज़ नहीं होता और सस्ती, बहुत सस्ती। अब अगर आप उसके पेटेंट्स ना करवाएं, बाकी सब कंपनीज को कह दें कि आप सब लोग बना सकते हैं, मैं पैसे भी नहीं लूँगा इसके, तो सबका फ़ायदा होगा, सस्ती होगी और सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वजह से पेटेंट्स को बहुत इनकरेज किया जाता है। ये है जिसके बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये 3 हैं। नंबर 1 कि उसकी यूटिलिटी हो, मतलब वो यूज़फुल हो, फ़ायदेमंद हो। सेकंड, नोवेल हो, मतलब न्यू हो। नॉन ऑब्वियस, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो जो लोग कहें यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ये तो ऐसे ही होगा। देयर शुड बी समथिंग न्यू, डिफरेंट। Look! It's Leonardo! That guy is crazy. It's not true! Are you looking for something? No! He's a strange guy. He's a very good guy. He helped me with my bike once. With this little balloon, it'll sound like a motorcycle. Crazy! Crazy! He's different, but he's not crazy. Of course he's not crazy. He might even be more intelligent than all of us. He's an inventor. An inventor? I don't believe it. Why not? You need to be wise to be an inventor. Like the person who invented electricity, engines, computers. There are all kinds of inventions, from the simplest to the most complex. Inventors are people who think about different problems and seek technical solutions for them. And if their solution is new, then it's an invention. My God, if you stop to think, almost everything has been invented. Yes, mankind owes a lot to inventors. Look! Those people are following Leonardo! I know those guys. They are thieves. We should go with the crazy guy. He's not crazy! What could he be carrying in the box? An invention, I guess. I have a friend that will know how to protect inventors. Julie! I'll call her right away. Julie, it's Marco. I'm with Bobby and Ping Pong following Leonardo the inventor because he's being followed by some thieves that seem to want to steal his invention. Where are you? Around the Central Avenue, close to the Sun Plaza. I'm close. Leonardo, jump on, quick! What a good invention motorcycles are. You, fat boy, what are you laughing at? Me? I was telling my friend a joke about a parrot that... Ah, shut up. I know where Julie and Leonardo will be. Let's get a taxi. To the patent office.
What is a patent? It's a type of certificate that the state grants to an inventor. The patent gives the inventor the exclusive right to exploit his invention. The period depends on each country. It's generally 20 years. We're here. And if the invention is not completely new, but part of one is changed? That's called a utility model and is also protected. Also protected? Of course, that is if the change provides a new use, advantage, or purpose to the object. Another means of protection is by an industrial design, which is given to the object. Ah, the design is key. And who has more rights? The inventor or the one that files a patent application first? In most countries, it's the person filing the application. That's why it's important to patent inventions immediately. I see. Patent applications are extremely important. And what must an invention have to be worthy of a patent? Usually there are 3 requirements: novelty, inventiveness, and industrial applicability. Slow down, please. First, novelty, or that the invention is unknown. Second, inventiveness, meaning that it is not obvious to those who know the technical field of the invention. Third, industrial applicability. The invention may be produced or used industrially. Julie, I think my invention meets the requirements. What is Leonardo's invention? I don't know. It must be something very useful for mankind. Something worth a lot of money. By the way, who's entitled to the rights? The inventor or the person who owns the patent? The person who owns the patent, because the inventor might have transferred his rights. Can the rights be transferred? Of course, the patent is a title that can be sold or licensed. I'll show you my invention. Is it a lamp? It looks like it. It's a trap to control insects. Leonardo, your invention will be very useful for farming. I would like it to help people. We're here! Now I'll go in and snatch the invention before the kid patents it. Ha ha ha! Here you go. Thank you. Hey kid, how about I go with you to patent that work? No way! He's the one that was following. Police! Police! Friends, Leonardo has just filed his application to patent his invention. Bravo! Tell me, what did you write on the door you stopped on? Ah, that! It's nothing. I thought that the lock could be covered. It keeps thieves away and it's decorative. Look. It's nothing. You can patent that too. As well? My God, I have so many ideas. Patents don't only protect your inventions, but also provide you with benefit. पेटेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. यूटिलिटी है, आपने फॉर एग्जांपल कोई मशीन बना दी, कोई कार ऐसी बना दी जिसका फ़ायदा पहुंचता है आवाम को, बगैर पेट्रोल के चलने वाली कार बना दी आपने. अभी आप अगर नेट पे सर्च करें, एक है इलॉन मस्क, उसने इलेक्ट्रिक कार के जो पेटेंट के राइट है वो फ्री कर दिए. मतलब कोई बना सकता है इलेक्ट्रिक कार अब उसके बनाए हुए तरीक़ों से. डिज़ाइन आपने ऐसा बना दिया जो एनवायरनमेंटल फ्रेंडली है, जो कि यूज़फुल है, या आपने प्लांट ऐसा न्यू बना दिया जो पहले से प्रोड्यूस नहीं होता था, उसका बहुत फ़ायदा है आवाम को, उससे और मेडिसिन बन सकती हैं. ये देखिए, ये कोक की बोतल का ये डिज़ाइन पेटेंट में आ जाता है. अब एक बिज़नेस पेटेंट भी है, क्योंकि बिज़नेस भी ऐसे चल गए हैं जिससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होता है, घर बैठ के चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंट होता है, और ऐसे बिज़नेस से इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है क्योंकि टैक्सेस पे किए जाते हैं. इस वजह से बिज़नेस का भी अब पेटेंट्स मिलना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि अमेज़ॉन का है, नेटफ्लिक्स का है. इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट न्यू बिज़नेस मॉडल दिया था लोगों को. अब ऑब्टेन करने के प्रोसेस है जी कि सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये इनोवेशन इज़ प्रैक्टिकल. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है, वकील हायर किया जाता है, पेटेंट्स की एप्लीकेशन सबमिट की जाती है. वो पेटेंट्स बाय द वे IPO है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, जो कि आपको पेटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पे आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो न्यूज़पेपर में भी देते हैं, वो खुद भी सर्च करते हैं कि इससे पहले तो किसी ने सबमिट नहीं करवाया, उसके बाद आपको उसका राइट मिल जाता है. पेटेंट्स इन्फ्रेंचमेंट मतलब पेटेंट्स की वायलेशन. अगर आप अनऑथराइज
यूज़ करते हैं पेटेंट्स किसी और पार्टी का, तो आप पे केस हो सकता है, बल्कि होगा लाजमी, आपको फाइन भी होगा। ट्रेडमार्क आता है जी। ट्रेडमार्क आपका नाम है, आपका लोगो हो, आपका स्लोगन है जो आपके बिजनेस के लिए आप यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क के भी डिफरेंट टाइप्स है। एक तो ट्रेडमार्क है जो ट्रेड के लिए आप यूज़ करते हैं, आप गुड्स बनाते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो उसमें जो मार्क यूज़ होता है उसको कहते हैं हम ट्रेडमार्क। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, मैकडोनल्ड्स। लेकिन अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्विस, जैसे बैंक की सर्विस हो गई, TCS यहाँ पे मेंशन है, अमेजोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं हम सर्विस मार्क, उसको ट्रेडमार्क नहीं कहते हैं। फिर है जी कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क में आपकी ऐसी मदर कंपनी जिसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, और वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कलेक्टिव मार्क यूज़ करते हैं मदर कंपनी का। और जैसे कि पेप्सी कंपनी है, उसके लेस चिप्स हैं, लेस तो अपना लोगो यूज़ करता है, लेकिन अगर आप बैक साइड पे लेस के देखें तो उसमें लिखा है ए प्रोडक्ट बाय पेप्सी, तो वो कलेक्टिव मार्क होता है। एग कॉफ़ी नंबर चले जाएं, वो भी अपना कलेक्टिव मार्क यूज़ करते हैं। सर्टिफिकेशन मार्क है ऐसा मार्क जो कि किसी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हलाल फूड बेचते हैं तो हलाल का जो लोगो अगर आप लगाते हैं तो वो सर्टिफिकेशन मार्क है। प्रोसेस क्या है जी? अगेन ट्रेडमार्क को ऑब्टेन करने का, आप एक अपना ट्रेडमार्क को मेंशन करते हैं, ये आपका ट्रेडमार्क है। आप उसकी ड्राइंग्स बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं और फिर वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। अगेन वो सर्च होता है, अगर वो किसी ने नहीं बनाई तो आपको ट्रेडमार्क का राइट मिल जाता है। Brands, brands, brands. Everything in the world is a brand. Everything! Well, we have to decide what our brand will be. Dear Bing Bong, we're going to brand history. History? With what brand, Marco? Follow me and you'll see. It's a place where they make t-shirts as customers want them. There! Heavens! It's perfect for what we want! Imagine, we buy white t-shirts. Ping Pong designs the motifs. You and I print them, place our brand, and we sell them in several places. Let's hope it works. We'll compete with very famous brands. But each can have its own space. Famous brands already have it. Our t-shirts will be unique. We will earn our space. Have you heard the latest on Vandalus? He copies the style of famous brands and sells his products as if they were originals. Vandalus is a crook. We'll show him that one can win honestly. With hard work and our own brand. Speaking of, here comes Julie. Hey guys, I went to the brand registry office. The brand is any symbol that helps distinguish a person or company's products and services from others in the market. A brand can be a word, figure, a three-dimensional shape, a sound. The goal is to distinguish that person's or company's product so it's not confused with others. If people can identify the product they want, they can ask for it. Exactly. And the entrepreneur can also offer it and advertise it. That's clear! Totally clear. If the product is well received, people will recognize the brand, and this will make it better known and increase its value. With the brand, you can create an image and a style for the product. Without a brand, nobody could recognize the product or service. It's a delicious chocolate, but I can't remember the brand. Wow, it's really important to have a brand. Wait a minute. What if somebody copies our brand? That is forbidden. Brands must be special and different to existing ones. They must be used to help identify, not confuse. But what would happen if they copy or imitate us? We denounce them to the corresponding authority so they enforce the law. In order to protect your brand, you must first register it. And what if I didn't register it? It will be difficult for you to protect it. Registration makes you the owner of the brand. Turns you into the owner. Into the only person authorized to use it. Is it valid forever? Registration lasts 10 years and can be renewed over and over again. We should create our own brand and register it immediately. Immediately. Everybody say words that customers might like, and we choose the best one. We should keep in mind that customers are going to associate the word with the product. What do you think of Bama Chupin? Bama Chupin?
by Babby, Marco, Chuli, and Ping Pong. It sounds like medicine. What about Reebok? Like Reebok, the brand on TV. Yes, it has worldwide recognition. Did you forget that we couldn't use a registered brand? Oh, I'm sorry. Unless we have the owner's permission. Can we get permission? Having a brand is like having a car. It's something that people can buy from you, or they can use it for some time if they pay what you settled on. And can we put whatever price we want? That depends on the brand's market value. That is why prestige is important, remember? Friends, we have to choose our brand. What do you think of Chuli Lopez? No! Julie Lopez is my name. It's my brand. I own it and do not authorize it. What about To Live? To live, clothes that suit you. To live, comfortable clothes. To live, I use To Live. I like to live. To live, with its registered R. That's it. It should be drawn and registered. Depending on the legislation of each country, different things can be forbidden when registering a brand. For more information, contact the trademark office in your area. Our designs will be To Live. What if someone comes out with To Live Sweets, for example? You can do it, because it's a different product that bears no relation to our t-shirts. There is no risk of confusion when it's products that have no relation to each other. For example, cookies and cars. Different products are ordered in different classes. Who establishes the classes? Product classes are explained in NICE's International Classification. This is our application. And stamp the copy for me, please. All right. And now, we must publish the application in the media they tell us. Why? So that any person that objects to our brand can inform the registry. And if no one objects to it, then the office is certain that the application is good. Our product has a registered brand. People identify it and ask for it. Because of our hard work, our brand has gained prestige, with which We all! फिर है जी कॉपीराइट में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने अपने काम को प्रोटेक्ट करना हो, जैसे कि आपने कोई पिक्चर बना दी, आपने कोई मूवी बना दी, आपने कोई शेर लिख दिया, पिक्चर बना दी, इन चीज़ों में आपको कॉपीराइट का मिल जाते हैं। अच्छा जी, इसमें ये चीज़ें आती हैं, आपने ड्रामेटिक वर्क बनाया, आपने कोई म्यूज़िक बना दिया, लिटरेचर वर्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको कॉपीराइट मिलता है। आइडिया एक्सप्रेशन डिक्टोनमी है जी, आप आइडिया को कॉपीराइट नहीं मिलता है। आप अगर ये सिर्फ ये कहें जी कि मेरे पास एक आइडिया है कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा जो बादलों में होगा, ठीक है, डिफरेंट है, कभी किसी ने नहीं बनाया ऐसा, लेकिन आपको उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। हाँ, अनलेस अनटिल आप फुल प्रोसेस बताएं कि ये पॉसिबल कैसे होगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर आप करते हैं, अगेन वायलेशन है, आप पे केस हो सकता है, फाइन होगा। इसी वजह से जब आप स्टूडेंट्स मोस्टली जब अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं, पिक्चर कॉपी पेस्ट करते हैं, वो कभी रेफरेंस नहीं लिखते हैं। आपने सेफ साइट के लिए हमेशा रेफरेंस लिखें कि आपने पिक्चर कहाँ से लिया है, टेक्स्ट कहाँ से लिया है, सोर्स मेंशन करें उसका, वरना ये सब इनलीगल है। Why shouldn't I be an artist? What's up, Marco? My parents say that I'm bound to starve. They got no respect for me. My uncle and Al made fun of me too when I say I wanted to be a painter, but my parents stuck by me. Lucky you. Without the arts, human beings would be less human. But still, there are people who don't consider art to be works, so they have no idea of the respect the authors deserve. Authors have the right to live off of their work. You're going to starve music, man. You'll see. Wrong, because I already know how to earn respect. Nonsense. That's just talk. Hi guys, what's going on? Hi, Julie. What a surprise to see you here. Can an artist make a living from his art? Of course, thanks to copyright. What is that? Think, Marco. You're walking down the street and you see a house or a car that you like. Can you just take it? Of course not. Only if it's mine, or if the owner lets me. That's it, because those things have an owner, right? If you compose a song or write a book, what are you in relation to it?
The author. Well, the author is the owner of his work. It's his because he created it. To do that, he worked hard, investing time, effort, talent, and often his own money. Okay, and no one can take away property without the owner's permission. The only one who can dispose of a work by selling or hiring it, allowing it to be reproduced, licensing it, and so on, is the author. So if I create a work, I can make money out of it, just as I can make money out of a house or car. The difference is that houses and cars are things you can touch. That's why they're called physical goods. But songs, poems, novels, dances, and so on are intellectual creations. They are things you cannot touch. The intellectual creations are intellectual goods. And all goods, both physical and intellectual, have owners whose rights should be respected. How do you know so much about it? I went to the copyright office and they gave me this brochure. It's about copyright. We already saw the main part. 1. The value of creativity. Creativity makes the world go round. 2. The importance of remembering that the author is the owner of his work. 3. Because of his creation, the author has rights that have to be recognized and protected. But can anyone be an author? Only human beings are capable of producing intellectual work. So an animal or machine or an institution can be an author. But aren't there other kinds of authorship? Yes, there's also joint authorship, when 2 or more people work together to create a work. The authorship of pseudonymous works, written under an assumed name, that of anonymous or unsigned works, and that of works created for an employer. What does copyright actually protect? Copyright protects creation in the form of literary and artistic work, whatever their nature, merit, or purpose. But if I buy a CD of music, what rights do I have? You're allowed to listen to it. But if I'm running a business, can I play the music to attract customers? Only if you pay for the use. Remember, buying the CD means listening to it is your only right. So, if the works are property, can they be inherited? Yes, copyright lasts the whole of the author's life and 50 years after his death. In many countries, it can be as much as 70 years. But then what? Anyone can use it and its reproduction is free. What if someone else then says the work is his? He can't. The author's moral rights, his authorship and control over the work go on forever. But pirates, they don't respect the author's right. They reproduce and sell their work without paying for it. Pirates! And those who plagiarize don't respect the author's right either. They copy other people's work and then they claim they are the authors. Plagiarize! That's stealing. Piracy and plagiarism are wrong. That's right. Both are infringements of copyright and that's a crime. But what about the art history professors who use works of several authors in his class? There's no problem. They are used at school for educational purposes and not to make money. You can also reproduce small fragments of a work to clarify an idea as long as you mention the author and the source. That's the right of quotation. So, can we do something later? No, thanks, Vangelos. I already have a date with Marcus's parents. What are you going to talk about? They asked me to talk to them about copyright. Great! Tell them that we, the authors, have a future. Present and future. Hey, I think I'm going to be an author. The law's on our side. ट्रेड सीक्रेट पे आ जाएं। ट्रेड सीक्रेट ऐसा फॉर्मूला, ऐसा पैटर्न, ऐसे कोई चीज़ जो कि दुनिया की नज़र में नहीं है, जो कि आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, आपने खुद उसको सेव करवाया। बिकॉज आप समझते हैं अगर मैं उसको रजिस्टर करवा दूंगा तो शायद कभी लोगों के सामने आ जाए और वो उसका फॉर्मूला लीक हो सकता है। इसमें
मैंने यहाँ पे जो लिंक लगाया है, ये कोका कोला की जो कंपनी है वो किस तरह उसकी डॉक्यूमेंट्री है कि वो कैसे मैन्युफैक्चर करती है, और उनका फार्मूला रजिस्टर नहीं है, वो ट्रेड सीक्रेट है। तो आप उसमें देखिए वो किस तरह से उसको सीक्रेट रखते हैं। अब ट्रेड हर फार्मूला, हर चीज़ ट्रेड सीक्रेट में नहीं आ सकती। वो चीज़ें आएंगी जो कि इजीली कॉपी ना हो सकती हो, जिसको आप इजीली सेव कर सकते हो, जो कंपनी को कंपैरेटिव एडवांटेज दे सकती हो, ये सब चीज़ें आपके ट्रेड सीक्रेट में आती हैं। अब ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्शन कैसे देंगे आप? आपके पास क्या फॉर्मूला है? सोचें कि आप कैसे इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जी कि जहाँ आपने लिखे जहाँ पे आपने रखा हो फॉर्मूला, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो, कोई ना जा सकता हो, जो जाए उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, कैमरेज लगे हो, पासवर्ड हो, डेटाबेस हो, किसने विजिट किया। लेकिन आप खुद सोचें इसके अलावा और कैसे सेव कर सकते हैं हम फॉर्मूला को या किसी भी चीज़ को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑडिट लाजमी करवाएं। इसमें आपको ये पता चलता है जी कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आप उसको सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं, आपको कितना एडवांटेज देता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि आपके कंपैरेटिव एडवांटेज बन सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की शेप में। ये मैंने कुछ लिंक्स लगाए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के, ये आप देखें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।